Salt hydrolysis is nothing but the hydrolysis of the weak component of the salt. Actually तीन तरह के salts होते हैं जिनमें hydrolysis possible है. That is weak acid and strong base, then weak base and strong acid, then weak acid and weak base. यानी कोई एक weak होना जरूरी है, either acid or base. तो इसका हम एग्जांपल लिया है सब में. इसमें weak acid और strong base में it is sodium acetate, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और इसमें अमोनियम साइनाइड. So जो हाइड्रोलिसिस होगा वो weak component का होगा, तो यहाँ पे weak component is CH3COO-. So it will give OH minus as the product. That is why the solution will be basic in nature and this is called anionic hydrolysis because hydrolysis of the anion is taking place. इस केस में क्या है, अमोनियम आयन इज द वीक कंपोनेंट, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा एंड वी विल गेट H+ एज द प्रोडक्ट. दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक एंड इट इज कॉल्ड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. यहाँ पर हमारा जो है दोनों ही वीक हैं, सो दो वीक कंपोनेंट हैं दैट इज कैटायन एज वेल एज अनायन, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा. एक से H+ मिलेगा और दूसरे से OH- मिलेगा. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज कैटायनिक एज वेल एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड बिकॉज़ द प्रोडक्ट्स आर बोथ H+ and OH-, so solution may be either acidic or basic depending on the strength of the acid or base. If acid is stronger then pH will be acidic, if base is stronger then the solution will be basic. अब हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखते हैं H = √KH/C. KH इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और दोनों में फार्मूला सेम है, दैट इज H = √KH/C इन बोथ these cases and in this case H = √KH means the degree of hydrolysis is independent of the concentration of the salt or of that of the ions. Okay, now यहाँ पर जो KH की वैल्यू है that is Kw/Ka, where Kw is the ionic product of water. यहाँ पर it is KH = Kw/Kb because it is a weak base और यहाँ पर weak acid है तो Ka आ गया और यहाँ पर because दोनों ही weak हैं तो KH = Kw/Ka into Kb. Okay, now OH- is the product, so concentration of OH- will be C into H. Okay, where C is the concentration of this ion. Okay, जिसका की हाइड्रोलिसिस हो रहा है that is anion की concentration है. Okay, normally it will be same as that of the salt concentration because this is a strong salt, so it will get totally ionized. But अगर मान लीजिए ये कैल्शियम एसीटेट होता then we will get 2 acetate ions for 1 mole of calcium acetate, so the concentration of anion may be double that of the salt. Okay, now in this case H+ is the product, so H+ concentration equal to C into H और यहाँ पर H+ is equal to Ka into H. अब हम pH का फार्मूला लिखते हैं, pH is equal to 7 + half into pKa plus log C. pKa because we have a weak acid and pH is greater than 7. Okay, because strong base and weak acid is there, so pH has to be greater than 7 because base is stronger. And here pH is equal to 7 minus half into pKb plus log C. The only difference is of sign. Here it is 7 plus and here it is 7 minus. And here it is pKa, here it is pKb. And pH is less than 7 because we are subtracting something from 7. And here pH is equal to 7 plus half into pKa minus pKb. You see this is independent of the concentration. Okay, so concentration of the given salt has no role in determining the pH of this type of salt. And the pH may be either negative, pKa minus pKb. If it is negative, then pH will be less than 7. That is the case when it is a stronger acid whose Ka value is higher and pKa value is lower. So in that case pH will be less than 7. Otherwise pH will be greater than 7. Thank you.